Hello everybody, welcome to iExamB's Legal Beat. This is Amrita, your law faculty here at iExamB. In this video, I'm going to discuss with you all 5 important judgments from IPC. Another topic that I have taken up today is offences against public tranquility. अगर आपने बाकी के videos miss कर दिए हैं, I would suggest you all to quickly go to the playlist of our channel Legal Bee and check out all the videos because I am bringing this videos in the series that is covering different areas of different subjects that are part of CBI APP law examination. If you have not subscribed our YouTube channel yet, I would suggest all of you to go and press the bell icon and subscribe it as soon as possible. If you have any queries, you can reach out to us on hello@iexamb.com, call us on 920-552-4028 or visit our website www.iexamb.com. The first case that we are going to discuss from Offences Against Public Tranquility is Mohan Singh versus State of Punjab, 1963. In this case, what it was held, the Supreme Court had held that it is only 5 or more persons that are going to constitute an assembly and that is an unlawful assembly. So यहाँ पर unlawful assembly की बात हो रही है and उसके बारे में describe किया गया है. Offences against public tranquility का एक बहुत ही important concept. Unlawful assembly is born provided of course the other requirements of said section as to the common object of the persons composing that assembly are satisfied. No doubt common object is inevitable for an unlawful assembly. This is also mentioned by the Honorable Supreme Court in this case. So what is the essential condition of an unlawful assembly? That its membership must be 5 or more. So what we understand from this case, you can read the detailed case summary and facts of this case. You can note down the citation आपके रेफरेंस के लिए या फिर आप इस वीडियो को पॉज करके पीपीटी को भी डाउनलोड कर सकते हैं. यू कैन कीप दीज पीपीटीज विद यू एज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट केसेस फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स. अनलॉफुल असेंबली में मेंबरशिप होनी चाहिए मिनिमम 5 और मोर एंड कॉमन ऑब्जेक्ट का कनेक्शन भी उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट फेमस केस है सुलेमान बेकरी केस 1993. ये भी काफ़ी लैंडमार्क केस है. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है दैट ऑल द अक्यूज्ड वर मेंबर्स ऑफ द स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड. स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड टीम को एलिगेशंस लगाकर चार्ज किया गया था एंड देयर ड्यूटी इज इटसेल्फ टू क्वेल द राइट्स टू कंट्रोल द राइट्स दैट वर going on at that time. So in this case, the court has rejected the argument and has held that a trespass becomes a criminal trespass only if it is done with an intention to annoy or to do something illegal, which is not the case here. यानी कि अगर उन्होंने राइट्स को कंट्रोल करने के लिए कोई स्टेप्स लिए हैं और उसमें अगर वो ट्रेसपास करते हैं तो वो क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं बन जाएगा बिकॉज उनका इंटेंशन इलीगल नहीं है. Whatever so-called entry that they have done is not going to amount to criminal trespass because it's their job, it's their duty to control the riots, and for that purpose they have entered into certain premises. So this is also a very famous case. Lakshmi Ammal versus Samyappa 1968. In this case, the word violence has been discussed. Violence is not restricted to force used against persons only, but it extends also to force against inanimate objects. यानी कि जब हम वायलेंस की बात करते हैं तो वायलेंस में सिर्फ एक रेस्ट्रिक्टेड अप्रोच नहीं रखी जा सकती दैट फोर्स इज यूज्ड अगेंस्ट पर्सन्स ओनली, देन ओनली वी विल से दैट वायलेंस इज कमिटेड. वायलेंस कैन इंक्लूड फोर्स अगेंस्ट इनएनिमेट नो ऑब्जेक्ट्स यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स. The word force and violence in this section connote different and distinct concepts. ये भी उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है फोर्स एंड वायलेंस में क्या डिफरेंस है. फोर्स एक नैरो कंसेप्ट है एंड इसकी डेफिनेशन सेक्शन 350 ऑफ आईपीसी में दी हुई है. सो उस हिसाब से फोर्स is going to be understood as per the definition and it is a narrowed down concept. Two persons, when we are saying talking about force, then it will be restricted to persons, but when we talk about violence, it includes violence done to property and other inanimate objects also. अगर हम कहते हैं कि फोर्स एक्सरसाइज किया गया है तो वो जनरली सिर्फ पर्सन के अगेंस्ट होगा, बट अगर हम वायलेंस की बात करते हैं तो वायलेंस विल बी अगेंस्ट प्रॉपर्टी और अदर नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो.
इन मंगा@mansingh यानी कि उर्फ नाम होते हैं कोई अक्यूज के, तो ऐसे लिखा जाता है, वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड. In this case, the Supreme Court has held that, I have taken the exact wordings for your reference here, we fail to appreciate as to how simply because the offences mischief or criminal trespass are used preceding the expression other offence in section 141 third clause. It should be taken that such offence would only relate to a minor offence of mischief or trespass, and that the expression other offence should be restricted only to that extent. यानी कि जो अदर ऑफेंस वर्ड यूज किया गया है सेक्शन 141 के थर्ड क्लॉज में, उसको हमें एक रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन देना चाहिए, बिकॉज मिसचीफ और ट्रेसपास से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं, जो उस कैटेगरी के ऑफेंसेस हैं जो माइनर ऑफेंसेस हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए हम अदर ऑफेंसेस को इंटरप्रेट करेंगे. यहाँ पे इंटरप्रिटेशन का एक इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस किया गया है. एज पॉइंटेड आउट बाय अस अबव, द ऑफेंस is mischief and trespass could also be as grave as that offense of murder, for which punishment of life imprisonment can be imposed as provided under section 438, 449 and 450, etc. So we straightaway hold that the argument of learned senior counsel for the appellants to import the principle of ejusdem generis to section 141 third cannot be accepted. So in this case, I would say that this case is very important for you to understand this famous principle also. Which principle? A principle of interpretation of statutes, that is ejusdem generis, means of the same kind. तो जब हम interpretation करते हैं, then we understand the meaning of the words according to the general word whatever is used, but it should not be very general in its approach. जो भी उसके अकम्पनिंग वर्ड्स हैं उसके हिसाब से उसको एक इंटरप्रिटेशन देना होता है, सेम काइंड और सेम कैटेगरी. तो यही इस केस में कहा गया है कि मिसचीफ और ट्रेसपास के ही कैटेगरी में वो अदर ऑफेंसेस को इंटरप्रेट किया जाएगा. दे विल बी लाइक दैट, इट विल बी इंटरप्रेटेड. सो दिस इज व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड इन द केस मंगा@mansingh वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड. स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस शकुंतला 2012. An accused person cannot be given the benefit of doubt only on the ground that injuries on his person were not explained particularly when the injuries are of simple and superficial nature. In this case, it was held that an assembly is a company of persons assembled together in a place, usually for a common purpose. So यहाँ पर assembly word को define किया गया है. assembly word का meaning क्या दिया गया है यहाँ पे? कॉमन पर्पस के लिए जब लोग इकट्ठा होते हैं एंड वो असेंबली हो जाता है, लेकिन अगर उसका पर्पस या ऑब्जेक्टिव इलीगल है, अनलॉफुल है, देन इट बिकम्स एन अनलॉफुल असेंबली. Wherever 5 or more persons are committing a crime and they have a common object and intention for that, then each of them would be liable for commission of such offense in terms of section 141 and 149 of IPC. When we are talking about offences against public tranquility, remember that unlawful assembly, rioting, common object, common intention भी यहाँ पर relate होता है, and ये काफ़ी ज़्यादा important concepts बन जाते हैं. So इससे related आपको काफ़ी सारे cases और मिलेंगे. ये cases तो आपने पढ़ने ही चाहिए, because इसमें काफ़ी सारा conceptual clarity भी आपको मिल रहा है and आपके concepts भी काफ़ी clear हो जाते हैं. So in this case, what it was held? State of Haryana versus Shakuntala. It is not possible to define the constituents or dimensions of an offence under section 149 simpliciter with regard to the dictionary meanings of the words unlawful assembly or assembly. यानी कि कॉमन ऑब्जेक्ट से उसको कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आप सिंपल डिक्शनरी मीनिंग यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते. ऑब्वियसली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेफिनेशंस इन इंडियन पीनल कोड, we have to be very clear that we cannot just have a plain dictionary meaning for it, because these are the definitions given in Indian Penal Code are defining offences. So the scope and everything depends upon the definition. So उसको हमें interpretation एक अलग तरीके से करना ज़रूरी है, and वहाँ पर कुछ allied sections के साथ connect करना भी ज़रूरी है, like we are connecting here with section 149. So this was all that I had to discuss with you all from offences against public tranquility, 5 important judgments. Stay tuned to Legal Bee and take benefit of all such kind of videos and contents that we keep on bringing up at Legal Bee. If you have any queries, you can reach out to us anytime directly in the comment section of this video, or you can also reach out to us by any of the modes mentioned over here. Thank you everybody.